सो डेटा कनेक्टिविटी में एक्सेल के अलावा भी बहुत सारे डेटा होते हैं. समटाइम यू कैन गॉट द डेटा फ्रॉम नोटपैड या CSV इसको कह सकते हैं. बट रिमेंबर, in the CSV have a two type the data. Okay, first तो कॉमा सेपरेटेड. तो इस चीज को समझिए कि नोट पैड के अंदर जो डेटा आती है इसके किस तरह के फॉर्मेट में होती है. टू फॉर्मेट में होती है. फर्स्ट द CSV like name comma city comma amount like this. So every column separate with the comma, that is the comma separated. Okay, this like data. So this is the CSV. Now again data is the TSV. TSV it means tab separated. Just like name and press the tab, city, tab, amount. So every column separate with the tab character. That is the tab separated. So before adding your CSV file, first open and check your data will separate it. Which form? Okay, just like when you open the file, if you have data as CSV, then open automatically in the Excel. If you data have a text format that like TSV, then opening the notepad. So before the adding, you can check your data type. Okay. Now select the text CSV, go to the location and select your data, which data you want to add, like this. Then open. Yeah. You can see here. So automatically this is the comma separated. Okay. अगर आपका टैब हुआ, you can choose the tab separate. Just like text to column in Excel. Excel के अंदर जो text to column होती है, सेम चीज यहाँ पे होती है. Just load. When you load, your data will come in. Okay. एंड अब मान लीजिए कि आपकी मेरी डेटा जो है टैब सेपरेटेड है. मैं एक डेटा आपके सामने बनाता हूँ टैब सेपरेटेड. ये डेटा है, इसको कॉपी किया और हम नोट पैड पे पेस्ट कर. दिस इज द टैब सेपरेटेड डेटा. ओके, एंड वी हैव सेव हियर with dt.txt in E drive. So basically, I'm trying in office. Sometimes, the Excel data is not getting into the Power BI. So what is the formula for that to be fixed in that? नहीं समझने दोबारा बोलेंगे. अभी आप DTXT आप रखना सेम फाइल एक्सेल है ना. एक्सेल इनपुट करने टाइम में वो डिस्प्ले ना डेटा ना ओके ओके, दिख कर रहे. देखिए अगर आपकी CSV फाइल है, इफ यू हैव द CSV फाइल, तो आप डायरेक्टली ओपन कर देंगे. लेकिन अगर आपके पास TXT फाइल है, तो आपको डेटा में जाके गेट डेटा फ्रॉम फाइल एंड सिलेक्ट हियर टेक्स्ट एंड CSV. ओके, एंड यू कैन सिलेक्ट द डेटा, देन यू कैन लोड. Okay, like this. And choose here tab. You need to get the data, the column sample data here, and then load. Okay. So some software give the extract the data in the notepad. Some software extract data in the TXT. Okay, CSV. So if you got the data in the CSV or text, TXT at CSV, both are the format. You can select here and select your file, which file you have. Select the file and just in the same Power BI and same Excel.
So data connectivity is data importing system, same, both are the software, Power BI and also Excel. In the Power BI from here, in the Excel from the data. Okay, understand? Mm. So if in the Excel you want to import the Excel, go to the data, there is the get data options. Click here, got the data, the file, database, both are the same like the Power BI. And you select the data and just click on the load, your data will be loaded. And want to see the data, go to the data table and click here, you see the data. Okay. So now you are able to import the data from the txt and csv. Any problem? Mm. Joseph, any problem? No, no, no. Okay. So if you got the data in the csv yeah, txt file, you can add from the csv and txt. But sometime you have got the data in the xml. Okay. Some software, some web-based software give the data in the XML file. Okay. And also the JSON file. You can select the XML and connect here. Go to the location, which location your file will be saved. Okay. And this is the XML data type. So file type dot XML. File type dot XML. When you open this data in the notepad, this file open in the notepad. Okay. And you can got the data like code, like this type of the code. This is the XML data code. Okay. You select here and just open. Your data import in the spreadsheet format, it means table format. The XML code convert into table format. Okay. Mm. So again questions, people why use the XML? So some software are using the web-based applications, just like Notepad type, internet, opening a software in the internet, and that time non-formatted data, then use the CSV. But sometime need to some partial formatted data. But problem is that ki note a web-based application can't read the formatting like Excel formatting, color border like. So they are using the XML coding, and in with XML coding enter the data in the partially format. तो वहां पे XML का यूज किया जाए. वे डेटा थोड़ा सा बड़ा है, इसे थोड़ा दिक्कत दे रहा है, या हो सकता है कुछ डेटा में प्रॉब्लम हो. मैं दूसरा डेटा डाउनलोड करके दिखाता हूँ, अपलोड करके दिखाता हूँ. फ्रॉम मोर फाइल एंड दिस इज द XML connect. We select the XML data. You can see here row, click here row in the row data. You can see the data. Okay. And click this checkbox and load the data. Same like JSON. JSON and XML are both of JSON, it means JavaScript file. Okay. Mm. The same you can do. But a problem, when you import data in JSON data, with JavaScript file, your data not into load into the directly Power BI. Your data go to the Power Query, and you have need to load in the Power BI. So this is the JSON file. Select here and open. Okay, load in the Power. You can check data and close and click here, close and apply. Your data will load. So now we're discussing. Now you are able to load the data from the Excel, from the Notepad and CSV, XML and JSON. Okay.
So XMLization is a rare case. Sometimes got the data in the CSV and Notepad, but Excel is the mostly can use. Again, one problem, my data is not a single file. My data is split into multiple file in the folder. जैसे आपने अपने कलीग को बोला कि भाई मुझे 2025 का डेटा भेज दो, अब उसने 2025 का डेटा एक सिंगल फाइल के सिंगल सीट पे नहीं भेजा, उसने मल्टीपल फाइल्स में भेज दिया इन द जिप फोल्डर लाइक दिस. ओके, this is the 33 files. Every file have a data, a small part of the data. So data type will be same, headings will be same, data will be changed. Okay, अब यहां पे मुझे अगर कंबाइंड रिपोर्ट बनानी है तो नीड टू कोलेट इन द ओनली सिंगल फाइल. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लम समझ में आया? So problem is that my data split into multiple files, and I want to make the report, so I need the single compiled data. So we have the two way. First, copy paste into one Excel, but take the time. And in future, if you increase your number of file, then you have manually enter the data. So यहाँ पे एक सिस्टम होता है, पावर बीआई या एक्सेल दोनों में अवेलेबल है, फोल्डर. गेट द डेटा फ्रॉम फोल्डर. ओके, सो कनेक्ट हियर, select your folder. So my folder in the my this PC E drive, this is the DT folder. I know. When you press the OK, you have got the list of your file. This is the list of file. अब यहां पे अगर मैं लोड करता हूं, so maybe load my data, this data in the Excel, not फाइल के अंदर की डेटा लोड नहीं होगी, फाइल के बाहर जो विजुअल है वो लोड होगी. सो इट इज क्लियर कि आप जो डेटा लोड करते हैं, जो डेटा विजुअल होती है वही डेटा लोड होती है. विच डेटा हैव ए विजुअल, देन दैट डेटा विल बी लोडेड. ओके, इसके अलावा कोई लोड नहीं हो. It means load the Excel list, Excel file list, not in the data in the file we will load. Okay, but यहाँ पे एक ऑप्शन आता है combine and load. क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फाइल. So you can select the one first file. Okay, we have select the first file. In the first file C21. So बाकी फाइलों में ये जो आपका नेम है, नेम जैन 5 मार्च, सो इस फील्ड के अकॉर्डिंग दे आर कंपाइलिंग द ऑल फाइल डेटा. तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि सारे फाइलों में एक जैसे हेडिंग होने चाहिए. मतलब कि अगर जैन टू दिसंबर है, इट मींस एवरी फाइल हैव ए जैन टू दिसंबर, नहीं, जरूरी नहीं है. पर जो फाइल हम सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर जो अवेलेबल फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स के अकॉर्डिंग वाईको से डेटा काउंट करेगा. किसी में कम या ज्यादा हो सकता है, नो प्रॉब्लम. जैसे इट मींस किसी फाइल में जनवरी नहीं है तो उस फाइल का डेटा ब्लैंक रखेगा. तो जो कॉलम मैच करेगी उसी कॉलम का डेटा वो कंपाइल. तो पॉसिबल हो सकता है कुछ एरर्स, तो यहां इस पे क्लिक करते हैं, इसके फाइल विद एरर एंड जस्ट ओके. Within few seconds, you got the complete data, complete compiling data. पूरा फाइल से अटैच कंबाइन हो गया इधर. जी, यहाँ पे आपको दिख सकता है विद फाइल नेम, यहाँ पे दिख जाएगा. देखिए, सो फाइल नंबर 10 डेटा, दिस द डेटा. फाइल नंबर 11 डेटा. फाइल नंबर 12, फाइल नंबर 30, दिखा है? सारे फाइल का डेटा यहाँ कंबाइन हो गया विद फाइल नेम. सबसे देख सकते हैं कि आपका डेटा सही है, गड़बड़. लेकिन हमने जो फर्स्ट फाइल सेलेक्ट की थी वो जैन सेलेक्ट की थी, 4th जैन. सो 4th जैन के अकॉर्डिंग उसने कंबाइन किया. ठीक है. अब इन फ्यूचर में मान लीजिए कोई फाइल बढ़ जाती, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर, इसका नाम मैं 37 रखता हूं. अब इस फाइल के अंदर थोड़ी सी हम चेंजिंग कर दें. जैसे कि मैं इस फाइल के अंदर जनवरी का कॉलम हटा देता हूं. वी हैव रिमूव द Jan column
and also add the one total column here. ठीक है, इसको हमने सेव, देन क्लोज इट. अब मुझे दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिफ्रेश. जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, यहां आप देखेंगे फिफ्थ नंबर जो हमारा 37 नंबर जो फाइल है ऑल्सो लोड हो जाएगी. यहां पे देखिए आ गई 37 फाइल. अब मैं इसको फिल्टर करता हूं, यहां से 37 फाइल को देखता हूं. तो 37 फाइल में आप देख सकते हैं कि जैन का डेटा ब्लैंक है, बट टोटल इज नॉट कमिंग हियर बिकॉज मेरा डेटा 37 के अकॉर्डिंग नहीं है, फोर्थ के अकॉर्डिंग है. जो फोर्थ में कॉलम होगा वही कॉलम है. सो इफ यू हैव एड द some column in the fourth, open the fourth. So यहाँ फोर्थ वाले कॉलम में अगर मैंने जनवरी डिलीट कर दिया तो एवरी डेटा से जनवरी डिलीट हो जाएगी. या फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पे टोटल ऐड कर दिया, अब जो है 37 का टोटल और जैन का टोटल दोनों आएगा, अब बाकियों में जो टोटल ब्लैंक हो जाएगा. रिफ्रेश की, सो टोटल कमिंग है. तो यहाँ पे देखिए 37 का टोटल आ गया एंड फोर्थ का टोटल. दिस क्लियर? 4 को सेम डेटा है. हाँ 37 यहाँ टोटल जो है, टोटल कॉलम में डेटा तो सिर्फ 37 नंबर फाइल्स में थी और फोर्थ नंबर फाइल पे थी ना. अब फोर्थ नंबर फाइल, हाँ फोर्थ नंबर फाइल मेरी बेस है, तो जो फोर्थ नंबर फाइल में चेंजिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग पूरा डेटा कंपाइल होगा. अगर कॉलम इज अवेलेबल तो यहाँ पे डेटा आएगी, कॉलम इज नॉट अवेलेबल सो डेटा विल बी ब्लैंक. ओके. अगर फोर्थ वाली कॉलम के अंदर में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक करता हूं, ऐसे सॉरी केस चेंज करता हूं, यहां पे एक प्रॉब्लम है कि केस चेंज भी होता है. We just change the name is the Jan, it means JN Jan, small letter. Okay, save the file. Now refresh my Power BI file. आया प्रॉब्लम आ गया ना, कॉलम जैन वाज नॉट फाउंड, अब यही पे एरर आ गया. समझे? सो केस यहाँ पे जो जनवरी है, जब आपका बाद अगर पहले होता तो जैन के अकॉर्डिंग उठाता, लेकिन एक ऑलरेडी जैन का फील्ड बन चुका है ना, तो प्रॉब्लम है. सो मुझे यहाँ पे इसको स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा जैन. अब नाउ आई कैन रिफ्रेश. वो प्रॉब्लम होगी बाद में, अगर फील्ड नेम चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम होगी डेटा. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर फोल्डर में डेटा है तो हम उस फोल्डर के डेटा को कैसे लेके आ सकते हैं. समझ में आ गया? सो अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर मल्टीपल फाइल्स ऑफ डेटा मिली है जो कि स्प्लिट है और आप उनको कंबाइन करके एक सीट में लाना चाहते इन द एक्सेल एंड ऑल्सो इन द पावर बीआई, दोनों के अंदर में फ्रॉम फोल्डर का ऑप्शन सेम है, यू कैन एड इट. ओके. और इससे एक बेनिफिट है कि इन फ्यूचर में कोई नई फाइल आती है तो वो भी ऑल्सो इंक्लूड हो जाएगी. जैसे कि मैं यहाँ पे एक एमटीडी रिपोर्ट बनाता हूँ, यू नो एमटीडी रिपोर्ट, मंथली मंथ टिल डेट रिपोर्ट, मंथ टिल डेट. जैसे कि आपकी एक रिपोर्ट है जो कि एवरी डे उसके अंदर डेटा ऐड होते जाता है. जैसे कि आज अगर 13 है, 14 है, तो आज आप 13 का डेटा ऐड करके फिर मेक द रिपोर्ट, फिर कल आप 14 का डेटा ऐड. तो इसमें क्या होता है कि हर कॉलम ऐड डेटा ऐड होता है. अब आपके पास जो डेटा मिलती है वो डेटा, यू कैन रिसीव द डेटा इन द सिंपल सिंगल फाइल. क्या एवरी डे पर्सन सेंड टू यू, या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करते हैं डेटा फाइल बाई फाइल एंड देन यू कैन कॉपी द डेटा एंड पेस्ट इनटू द योर मास्टर सीट. सो यहां करने की जरूरत नहीं, यू कैन डाउनलोड द डेटा एंड कॉपी पेस्ट इन द फोल्डर, वो ऑटोमेटिकली कंपाइल कर लेगा. one more thing, suppose I'm getting data in the next month, so already the existed data we have been visualized. So the या next month राइट, data we add into the Excel, and then we can refresh in our Power BI, so that automatically बिल्कुल बिल्कुल. whatever the visualizations which have been there, so it will be updated in visualization also.
या बिल्कुल अपडेट हो जाएंगे। आप आपका डेटा अपडेट होगा, आपके विजुअलाइजेशन अपडेट होगा। डेटा अपडेट कब होगा? जब आपका सोर्स अपडेट होगा। पावर बीआई सिंपल समझिए, पावर बीआई इज द मिरर ऑफ द योर सोर्स डेटा। ओके ओके ओके। ठीक है ना? सो इफ मेन ऑब्जेक्ट मीन मेन जस्ट लाइक मिरर, इफ मेन ऑब्जेक्ट मूव तो ऑल्सो मिरर ऑब्जेक्ट मूव। Same thing here. If your source data will be update or change or delete, also here a problem. If your data will be changed, just like heading will be changed, the problem here. So बस आप इसका ध्यान रखिएगा कि आपकी हेडिंग के साथ छेड़छाड़। ओके, डेटा में अगर कुछ चेंजिंग होती है, अपडेट होता है या डिलीट होती है, तो पावर बीआई जस्ट अपडेट। Next, if you make the quarterly report, and this is the QTD report, quarter till report. So you make the report in the quarter one. Now you move to quarter two. So you need to delete the data, quarter one data. You have delete quarter one data. Also you have remove. You can add the quarter two data. Also it is the update. But one conditions: column name is not be changed. If you change the column name, have a problem. Yes, sir. That is the main source, sir, right, sir? Yeah. Because that has been stick up with the visualization. What with the formula which have been chosen in our data. So that only is the main reason, right? ओके, तो अब यहाँ पे अगली जो टॉपिक आती है पीडीएफ। समटाइम वी गॉट द डेटा इन द पीडीएफ। ओके, Mm. but remember pdf not a scan. If you have a pdf in a scan copy, so can't load Okay. data in the converted. How can check my data is a pdf or converted? So this is the data. We have select our data like this. This is the converted, not a pdf, not a image converted. Okay, Mm. but one data also we have. Just download. Wait a few minutes. This is the my also data. In this my data, this is the report, and I want to extract this table. So this is the problem. Data in the data format. If you have data not a data format, then have a problem. Okay. So now this report is like the data. So just we have copy this and go to the Power BI and here paste and select the PDF and open. So in the my PDF, have a multiple sheets and every sheet have a heading. You can see here. Every sheet have a heading. Have a heading. But this PDF this is the first sheet have a heading and second here is not a heading. So the data not a merge. Okay. You can see here. So table we can also add the one by one page data and also combine the 1 to 10 page. Compile here. No need to compile. So my data have a multiple page, but every page have a same heading. So Power BI is the compiler. Mm. But your data have a multiple page, but your single page have a heading and next page is not having. So Power BI not be compiled. Give the different sheets. Okay. Mm. Select here and load. Your data will be compiled and load. One big problem is what about this data? Because this is my report yearly one time the report type. So I want to import this data in the Power BI. So that have problem because data in the data. Okay, if your data have a report format, so that time have a problem. So go to the more and select the PDF. And okay, select the PDF here. PDF here. And first take the time because file is very heavy.
Now give the only for list table, which data have a table list. You see here. Okay, table list. Every table have a different type of the data. So not have a combined here. See here. Okay, not combined. The data which you shown the different pages with the different headings, right? Yeah, this is the heading, but next page is not a heading, so the data not a compile. Okay, which page have a heading will be compiled, which is not a heading, not a compile. Okay, so this file need to data compiling system, data cleaning system in the Excel. Load the data in the Excel, different pages, then manually copy and paste in the one page. Then you can got the data. Okay, understand, sir? Yes. So today in the class, we have discussed get the import the data from the file. Okay, तो फाइल में हमने क्या बात की? एक्सेल, सीएसवी, एक्सएमएल, जेसन, फोल्डर एंड पीडीएफ, एंड दे आर बोथ नॉट एज सॉफ्टवेयर, सो मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि सिर्फ शेयर पॉइंट का फोल्डर और पैराग्राफ फोल्डर मेरे पास नहीं है, ये मैं नहीं बता. इज क्लियर? So you have tried to practice this. Tomorrow we have discussed get the data from the server. Okay, yeah, online services. And after that, we discuss about the data cleaning. When you get the data, but data in not a proper way, need to some editing the data in the Power BI. How can do it? Okay. So डेटा हैंडलिंग हम बात करेंगे अगली क्लास में. अच्छा हाँ, मैं आपको ये डेटाबेस कनेक्टिविटी कल नहीं बता पाऊंगा. है प्रॉब्लम कि मेरे पीसी में एसक्यूएल सर्वर फिलहाल नहीं. रीजन दिस कि मेरा पुराना लैपटॉप है जिसमें प्रॉब्लम है. मैंने लैपटॉप नया ऑर्डर किया हुआ है, मे बी 2-3-4 दिनों में मुझे रिसीव हो जाएगी. ठीक है ना, तो मैं उसको कर लूंगा. बेसिकली मेरे एक फ्रेंड्स है जो जर्मनी में रहते हैं. मेरे फ्रेंड क्या है, स्टूडेंट्स हैं, जर्मनी में रहते हैं. तो उन्होंने मुझे एक लैपटॉप अरेंज करा दिया है अच्छा सा सस्ता में, तो वहां से भेज रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है. तो मुझे 3-4 दिन में मिल जाएंगे. आके दिल्ली आ चुका है, कस्टम में फंसा हुआ है. तो मेरे मोस्टली लैपटॉप जो है ना, मैं मोस्टली जो लैपटॉप्स होते हैं मेरे दोस्त ही भेजते हैं या दुबई से भेजते हैं. कुछ तो जो फिर हमारे पहले तो स्टूडेंट थे पर अब दोस्त हो गए हैं. तो कुछ लोग तो दुबई से भेजते हैं, कुछ लोग जर्मनी साइड से भेजते हैं. तो वहाँ की जो लैपटॉप्स होती है ना थोड़ा सा अच्छी होती है, क्वालिटी उनका बिल्ड क्वालिटी ठीक होता है. पर इंडिया के अंदर जो अवेलेबल मिलते हैं ना सर, उसमें क्वालिटी नहीं ठीक होता है. और मेरा रफ एंड टफ यूज होता है ना सर. 17 आवर 18 आवर पर डे यूज होता है. तो इसलिए थोड़ा सा